Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of No One Tells You, where we talk about the hidden things in startups, tech, and building stuff. And today I'm joined by someone very special who I've known for so many years, and we have worked on multiple things before. And he's someone who has held multiple roles at various organizations in different geographies. Presently in the UK, I'm joined with Hashim Khan. Hi Hashim, Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. I am good, Mr. Amir. How are you? Doing well, man. You didn't Thanks for mention that we joining. also live together. Oh yeah, I was gonna do that later on, but yeah, thanks for bringing that up. So we lived together for how many years? For like 2 years, Yeah, three one and a years, half hours. Yeah. 1.5 years. Yeah, and we've gone through some traumatic times together as well, Yeah. and some really cool ones also. Um, but this talk is more towards the careers that we've built. Maybe we do another one for all the fun stuff we did. Yeah. Yeah. Acha, nice. So Hashim, you're currently at Fleek in the UK, and you moved there recently. So why don't you give us a bit of an intro of what are you doing nowadays, and anything other than that you want to share? Yeah. So I moved to UK around a year ago. I've been with Fleek for like 2.5 years. Um, been with like startups mostly for like the past 5 years. So was at Bazaar for a couple of years, Daraz for like I think 6 or 9 months, and then 2.5 years with Fleek. Usse pehle I spent around 5 years with FMCGs. Currently, so at Fleek, it's been interesting. Like I'm sort of in a role where I've been setting up functions. So any function that is just being set up is like in the early stage, which is often called 0 to 1 journey in startups. So been setting that up for multiple functions at Fleek, and for the past year or so, been doing that with the finance function. That's why I moved to the UK. This is where like our founders sit, and sort of the headquarters is. So yeah, been challenging because I don't come from a finance background myself, but yeah, that's what I'm up to. Other than that, just sort of navigating the challenges of shifting countries. Of course, Hmm. moving from Pakistan to UK, like big change. So yeah, that's what's been going on. Yeah, I can relate, man. Even though moving to Dubai is not that big of a change, Mm. but UK, I can imagine the culture is opposite. Yeah. Right. So Hashim, you just said FMCG. So you've worked at Nestle, right, for a very long time, and then you went to Daraz, Bazaar, and now Fleek. So tell us how this whole experience and how all of this shift was from going from an MNC to a startup. What's the biggest difference that you've seen in these operations? Mm. I would say from an outside perspective, like probably what you would hear the most often is the biggest difference is space, right? Hmm. Organization like Nestle, like if they want to, implement some demand forecasting software, which I was working on, is the timelines on those projects are like 2 saal, ek saal, right? Yeah, yeah. Um, and bureaucracy and approvals and all of that, which of course, as the company scales, is needed. Hmm. And oftentimes you'll hear the good part about startups is like it's very it's very high pace, and when you're interviewing people and you're asking them why do you want to join a startup, they're like pace bahut hogi and ye bahut hoga. But I think Hmm. what what no one tells you is is the environment inside a startup, right? And Hmm. we use this analogy ke startup is like an aeroplane that is taken off, and Hmm. now you're putting the now you're assembling it, right? Now assembling it. Yeah. And I was just With no life onboarding jackets on the plane. I was just onboarding someone yesterday, and मैं उसको एग्जांपल दे रहा था कि भाई just ये what this analogy means, right? What this Hmm. means is कि समझे आप जहाज चल रहा है और उसके अंदर 30 लोग हैं. um, हर बंदे की कोई ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जहाज चल रहा है, उसके लिए से विंग्स नहीं है, इंजन भी सही नहीं है, बाथरूम का दरवाजा नहीं है, जो भी मसले हैं Hmm. जहाज, और Hmm. 30 लोग हैं. अब हर बंदे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो चाहे मैं एक एंट्री लेवल पे हूँ और मेरी शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि शायद आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो अभी एंट्री लेवल हूँ इन एन एमएनसी में भी, यू नो आपका शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता. लेकिन
स्टार्टअप में अगर एक जहाज उड़ रहा है और उसके पुर्जे नहीं है और आपको हायर किया गया है, इसका मतलब है आपको उसी काम के लिए हायर किया गया है जिसको जहाज को उड़ने के लिए वो बहुत क्रिटिकल है, राइट? Hmm. Yeah. Um, Otherwise you won't hire that person because you're just so it's such a chaotic environment. You're doing so much. You don't want to solve the problems of which are not absolute priorities. You don't Um, have the money either. you don't have the money either, right? You don't have the structure either. So अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हुई है कि लेट्स से एक राइट विंग के पंखे में कोई क्रैक आया हुआ है जो आपने ठीक करना है. I think the biggest difference between MNCs and startups is that at a startup, especially in early stage startups, there will be no one to tell you how to do it, Hmm. right? There will be ये नहीं हो सकता कि हाँ मैंने तो सेल्फी मांगी थी उसने अभी तक ला के नहीं दी मुझे क्योंकि जहाज क्रैश कर जाएगा तो Yeah. ये no one wants to hear any excuses, right? Whereas in the MNC world it's very easy कि हाँ मैंने email की हुई है वो अभी it's on them, right? There are Hmm. so many hurdles that can be excuses in an MNC. In a startup environment, no hurdle is an excuse. You just need to know how to get shit done, right? Yeah. So अगर आप उस पंखे के रिस्पॉन्सिबल हैं तो यू आर एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो द ओनरशिप लेवल्स, चाहे बीच में ईद आ गई, कुछ आ गया, कोविड आ गया, Hmm. जो हालात खराब हो गए, सैलाब आ गया, जो भी आ गया. ऑफ कोर्स मैं थोड़ी लाइफ एंड डेथ सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ जहाज के साथ. एंड ऑफ कोर्स लाइक there is a support system, there is your manager, there are leaders etc. But crux of it I think is कि जो बंदा इस एटीट्यूड से स्टार्टअप कर सकता है ना कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम का सीईओ हूँ, you know. Hmm. Because as a CEO you can't make excuses, right? Everything is your responsibility, and everyone in a startup is, I feel like, mini CEOs. um Yeah. and I think that is probably the biggest difference where I often, when I'm interviewing people, पाकिस्तान में let's say लोगों को अब जो भी जॉब अवेलेबल होती है लोग अप्लाई कर देते हैं, राइट? इतनी Hmm. we're not really spoiled for choice. But I think people don't really understand that it's just a different breed of people who can do startups and a different breed of people who can do MNCs. And doesn't mean one is better than the other, but you really have to understand what you're signing up for if you want to join a startup. So is that sort of like a specialist versus generalist argument? या कुछ और कह रहे हो? No, I think it's just um, I think early in your career शायद आप ज़्यादा दोनों जगहों पे मे बी आप एज अ स्पेशलिस्ट ग्रो कर सकते हो, लेकिन आई फील के जिस तरह इन एन MNC, लाइक if you if you want if if you want to learn discipline, if you want to learn professionalism, if you want to learn the art of problem solving, if you want to have a good work life balance, right? If you want के chaotic, मेरे बहुत ज़्यादा chaotic days ना हो, Hmm. um, then then that's perfectly fine. If you want that, right? Then it's a different path for you. But if you're signing up for a startup, then you have to understand यार, जैसे for example, you might be responsible for like doing supplier payments of millions of dollars a month, which you have not done before. No one's telling you how to do it. Google Sheets pay, you're figuring out, etc. I just feel Hmm. कि it's a different mindset of people. And I think अक्सर हो जाता है कि from the outside world, startups feel very charming, राइट? आपने फेसबुक की मूवी देखी होती है, आपके दोस्त आपको लग रहा था पार्टी कर रहे हैं तो 11 बजे दफ्तर जा रहे हैं, रात में ढाबों में बैठे हैं, मुझे भी ये वाली लाइफ चाहिए. बट आई थिंक इट्स Hmm. दी a lot of people I see signing up for startups and realizing in a few weeks that this is not for us. Of course, in Pakistan it's a different argument. It's not like आपके पास बहुत options हैं. But generally, like in the UK, for example, I've seen so many people who sign up for startups and they resign in a week. They're Hmm. like, this is Yep. not for us. हाँ, ये तो बहुत होता है. It happens everywhere. कि वो the what do you call it? It's like you said कि वो social network देख के बहुत लोग excite हो Mm. जाते हैं कि यार ये तो startup में जाके अच्छा ये होता है. Is that how Mm. you do it? And then when you get in, so it's totally different. Yeah, absolutely. तो ये बताओ कि I mean एक बात कहते हैं लोग, समथिंग दैट पीपल से कि जो फाउंडर होता है या जो कंपनी का सीईओ होता है, द टॉप लीडरशिप, ठीक है, उनके ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं और जो उनकी डिसीजंस होते हैं वो दैट्स टोटली डिफरेंट. लाइक वो बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर होता है. और जो बाकी सारी टीम होती है वो बड़ा ऑपरेशनली वर्क कर रही होती है. सो दे आर जस्ट वरीड अबाउट कि यार ये काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है. बट द फाउंडर्स आर मोर वरीड अबाउट के द बिग टिकट आइटम्स लाइक सैलरी,
देनी है, पैसा रेज करना है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को मैनेज करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो यू वर, आई थिंक बाजार के पहले 2-3 एम्प्लॉयज में यू वर वन ऑफ देम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yeah, I mean, I joined Bazaar when it was 3 months old. लेकिन वो leadership year almost एक साथ ही आई थी. So I was the हाँ. first person in operations, you could say. Okay, so the first guy in operations, would you say कि this is something fair that people say कि यार employee तो employee है ना, अगर founding startup member है भी तो वो फिर भी एक employee था. So how would you take that कि यार अच्छा मैं, although I was an employee but still I was one of the biggest cogs in the machine. How do you translate that whole thing? Hmm. Yeah, I think what people say, what you were referring to, I would say yes and no. And I think that is the Hmm. difference in who succeeds at a startup and who doesn't, right? And when I say succeed, like I mean who enjoy working at startups, who feel like startup is for them, right? Hmm. I feel like titles don't matter, right? Of course, like fundraise करना है is not someone that an associate is going to come in and handle. Yeah. लेकिन क्योंकि स्टार्टअप्स में ना कोई आपके रोल की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, राइट? Hmm. एंड आई वुड से आई डिड नॉट रियलाइज दैट वेल इनफ एट बाजार, राइट, माई सेल्फ, बिकॉज मैं 5 साल एमएनसी से आया था, तो मुझे भी लगता था कि यार ये शायद ये वाले डिसीजन शायद पता नहीं कौन लेगा. Hmm. But I would give the example of like other people that I saw and learned from was, you know, associates at Bazaar, in like 3, 4, 6 months out of college, um, was solving the hardest problems at Bazaar, right? Um, Hmm. the hardest problems being like, Bazaar mein we scaled from like 1 to 45 cities in 2 years, right? So you can imagine kitna operational वहाँ पे Hmm. काम था. And how do you automate the warehouse, how do you know what is going out, how do you know कितना कैश वापस आ रहा है. कैश इज अ ग्रेट एग्जांपल, लाइक पता नहीं कितने Yeah, करोड़ों yeah, yeah. रुपए हम दिन में कैश हैंडलिंग करते थे. एंड द पीपल हु वर सॉल्विंग हाउ टू डू दैट वर फ्रेश ईयर स्टूडेंट्स, 1 साल 1.5 साल आउट ऑफ कॉलेज, because they showed that they can do it, right? And the reverse I've also seen happen, where people at director and VP level coming in, but because they were not delivering, um, their scope just shortened and shortened and shortened, right? क्योंकि if you compare that with an MNC, like if you're a director supply chain at an MNC, वो supply chain का एक चार्टर है, वो 150 साल से वही चार्टर चल रहा है. आपने भी आके वही देखना है. आप अच्छा करेंगे ग्रेट, नहीं अच्छा करेंगे शायद आप या फायर हो जाएं, या कोई किसी और रोल में मूव कर दिए जाएं. Whereas at startup, what I feel is different is title is just for LinkedIn or your resume, right? But Um, ये is this a choice design या फिर ये बस dominoes fall करते हैं और ये इस तरह की टीम बन जाती है, क्या होता है? Because someone uh, like अगर आप किसी आम बिजनेसमैन के पास जाके ये बात बोलो कि यार तुम्हारे करोड़ों का बिजनेस है, ये तुम्हारा बेटा है, वो hmm, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, इसको रख लो, वो नहीं रखेगा उसको. hmm, वो कहेगा नहीं, किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जिसका 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट्स गोइंग yeah. ऑन इन स्टार्टअप्स? Hmm. I would say how this works is like, imagine आपके पास let's say operations है, right? बाजार में operations was probably one of the core things that you were trying to solve, right? Now let's say you bring on, you like यार ये तो बहुत ऑपरेशन सेटअप करना है हमने, 40-45 सिटीज में स्केल करना है. This is the sort of culture we want to drive in the organization. तो इस तरह का बंदा है, लाके इस तरह का बंदा ढूंढते हैं मार्केट में. let's say you hired him and you brought him on, right? Now, and at the other end, you let's say hired an associate to do, maybe he was good at Excel, so you wanted him to like do your reporting, right? um अब let's compare the path of these two people. अब let's say ये जो operations का बंदा है, let's say he's struggling, right? uh when we say struggling, like the challenges, for example, I faced at Bazaar was when I joined. I think at that time we were doing like 40-50 vehicle deliveries a day, and we used to have 20 drivers, right? So हर दिन हमारे ओके. 35-40 ड्राइवर शॉर्ट होते थे, और एक मार धाड़ होती थी कि वो 40 ड्राइवर कहाँ से पूरे करें, राइट? हम खुद जा रहे होते थे डिलीवरीज पे, हेड ऑफिस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जा रहे होते थे, एचआर के लोग जा रहे होते थे डिलीवरी करने के लिए, राइट? नाउ you need to build a pipeline of hiring delivery riders, right? You need a pipeline या. of, and this is one of the problems you're facing among 50 problems, right? Now, if you're not able to solve it, ऐसा नहीं होगा कि वही अगेन जहाज वाली एग्जांपल है, राइट? आपने लेट्स से एक जहाज में हाँ.
एक वीपी इंजीनियरिंग हायर किया है एक टरबाइन साफ करने के लिए, उससे नहीं हो रहा, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार चलो वीपी है, देखते रहते हैं। पीपल विल बी लाइक भाई जहाज क्रैश हो रहा है, तुम एक काम करो, हटो, राइट? हाँ। अब ऑब्वियसली मैं इफ यू नॉट इनकॉम्पिटेंट बट यू जस्ट स्ट्रगलिंग, व्हाट विल हम्म। हैपन इज कि लेट्स से आप बोलोगे यार एक काम करते हैं, डिलीवरी के लिए एक और बंदा रख लेते हैं कि वो डिलीवरी राइटर्स पूरे कर ले, हम्म। और हाशिम जो है वो लेट्स से वेयर हाउसिंग पे फोकस कर ले, बिकॉज फोकस की जरूरत है, राइट? हम्म। That is how your scope would sort of shorten, which would never happen in an MNC, right? Because it's structured बहुत है वो organization. Versus अब वो जो बच्चा है, अब वो Excel के अंदर let's say वो बहुत crazy insights लेकर आ रहा है, बोला यार मैंने नोट किया है कि हमारी जो ये वाली कैटेगरी है, इसको अगर हम यहाँ की जगह यहाँ रखेंगे, तो हमारी पिकिंग टाइम में 15 सेकंड बच जाएगा, ठीक है? हम्म। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये वीकेंड पे जाके implement करा दूँ, no one's going to say no, हाँ। right? Um, he's going to go and implement it, and then he's going to find something else, and he's going to find something else, and his scope would increase and increase and increase, right? There's this very nice article about startups grow exponentially, but humans grow linearly, हम्म। right? And at one point, it's just things just start to outgrow you. So I think it's all about how quickly you can grow. And um, even वो जो आपने उसकी एग्जांपल दी सेठ की, अपने बेटे को नहीं रखेगा, वो शायद अपने बेटे को ऑफिस बुलाना स्टार्ट कर देगा, राइट? बट अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और बेटा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ही विल स्टार्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, राइट? The only difference in startups is that at any given point you would have 1,000 problems to solve, right? हम्म। And they're all up for grabs, right? So I've seen people like हमारे बाजार में जो he's now at Fleek, he was just a fresh grad out of IBA. I think maybe 6 months of experience hoga, and in a year or so he was a senior product manager. He was designing our product roadmaps and stuff like that, because he could just take a lot on his plate, right? हम्म। नहीं, ये चीज तो हमने देखी थी इवन व्हेन वी वर डूइंग स्विफ्ट। आई थिंक हम उस वक्त शायद साथ रहते थे जब मैं Yeah, स्विफ्ट बना रहा था। हाँ। yeah. तो उस वक्त वी सॉ ऑल ऑफ दिस के समवन फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड, वो किसी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी से आता था, एंड ही वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी वर डूइंग। वो कहता था ये तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, दिस इज नॉट हाउ वी डू इट। एंड वी वर लाइक यार हम हमारे लिए तो चल रहा है। एंड ही वुड Mm, ट्राई टू ब्रेक दैट कन्वेंशन दैट वी हैड बिल्ट फॉर आवर ओन सेल्व्स। इवेंचुअली ये फिगर आउट हुआ कि यू नो in 80% of the things that we who were inexperienced in logistics tech or logistics operations were doing things in a far better way than those guys at 20 years old logistics companies. And in just those 20%, like जैसे finance की तुमने बात की, finance was something जिसमें हमने देखा था कि when an experienced guy stepped in, तो उसने बहुत सारे identified loopholes जो वो पिछली experience से लेके आया था, he was able to implement those mm, in Swift as well, which worked out fine eventually. So I think it's like this 80-20 thing that mm, works for both ways. MNCs के लिए भी यही ratio है मेरे ख्याल से, but for them it's flipped. For startups it's like 80% new things, new mm. processes, new ops and all. Yeah, ठीक है, I think I that agree with you on that. one Yeah. one important thing you said over here is कि जो बंदा बाहर से आता है ना, I think ये बड़ा important point होता है कि you have to unlearn a lot at You have to startups. Like unlearn. this is a Yeah, term I'd never heard before I joined a startup. Unlearn, right? yeah. ये आपने जो सीखा हुआ है वो, क्योंकि typically in most startups, like all the stuff that you are doing, there is no one else in the world who's doing that, right? Yeah. हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल हम भी अगर क्रॉस बॉर्डर बाहर से देखें तो फ्लीक इज लाइक अ क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स B2B, there's Alibaba's playbook to follow, but Hmm. there are so many things that we have which are so unique to us, right? Unique होंगे. Yeah. When you start solving those problems, like even finance, like मैं जब फाइनेंस देख रहा था, मुझे I knew finance because of course बाजार में I was at a leadership position, and Nestle में I was doing business planning and stuff, तो फाइनेंस का आइडिया था, बट अकाउंटिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं था, राइट? Accounting. डिफरेंस भी नहीं पता था Hmm. दोनों में। um, and when I joined, started looking into finance, so हमारे कुछ reporting deadlines थी, and I had to dive deep into accounting, and I was like, I need help, right? And हमारे founders काफी well connected हैं, of course VCs well connected हैं, we started speaking to some people, and we realized यार जो problem मैं face कर रहा हूँ वो कोई भी नहीं face कर रहा, right? Maybe it's not कि accounting नहीं की हुई, accounting तो probably बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रायोरिटी कैसी है, कितने टाइम में करना है, Hmm. there's इतनी यूनिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से you have to solve Yeah. your own problem, right? And that is the 80-20 thing. That is why you'll always hear the 0 to 1 people
are not the people that take you from 1 to 100. 1 to 1, 1 to they're 100 not. वाले different लोग हैं, 0 to 1 वाले different लोग हैं. Yeah, absolutely, absolutely. ये बहुत ज़रूरी बात तुमने की है. अच्छा, so let's talk about your own startup escapade जो आपने कुछ अरसे के लिए की थी. I Mm. remember those discussions in the early days as well. Yeah. Hunar, right? What Mm. happened at Hunar? And I think तुमने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी before you even say anything about it. इसके you recognized very early on कि ये शायद इसका अभी ठीक टाइम नहीं है, या it's not the right place or it's not the right environment right now, whatever the case was, but you decided it very early and you sort of shut it down. So tell us a little about Mm. that. कि हुआ क्या था? Yeah, so I would say कि why I wanted to do Hunar in the first place Hmm. was कि क्योंकि अचानक से ना बहुत कूल हो गया था 2020 में. आई रिमेंबर तुम क्योंकि you have built your companies is even though they have the startup spirit, I would say they're slightly different to how a VC backed हाँ uh, हाँ, way more different because man. of the like Services business है one वो way तो. कि हाँ. startup should make sense. ये फजूल में पैसा जला जला के नहीं कंपनी खड़ी करनी, राइट? सो Hmm. द sort of startups that I worked at was slightly different. Hmm. एंड वो टाइम ऐसा था 2020 2021 में हम भी काफी बात करते थे इस टॉपिक पे. कूल हो गया था स्टार्टअप करना, राइट? Yeah. पैसा आ रहा था पाकिस्तान में, was a cool thing to do. VC money was available ना उस वक्त बहुत ज़्यादा. Yeah, exactly. Capital was free. Obviously, COVID हुआ हुआ था, and Hmm. interest rates almost zero थे. Yeah. Everyone was raising money. So, um, and I was like working, 14, 16 hours a day, sleeping in warehouses. I know there was a time when I used to sleep and I had an alarm at 2 a.m., 4 a.m., 6 a.m. to check के warehouse में क्या हो रहा है. क्योंकि कभी स्ट्राइक हो जाती थी, कभी दीवार गिर जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी That कुछ हो जाता था. but that wasn't bazaar. That was That was in Daraz, बाजार. right? So at that time I was like, यार पाकिस्तान में इतना कैपिटल आ रहा है, and this is the time to solve so many problems with the country. Like पाकिस्तान में literally पत्थर उठाओ नीचे एक problem है, which is Hmm. solvable. But I want to do something that I'm passionate about, right? Hmm. Like I'm not passionate about a grocery person getting his order 5 hours Hmm. quicker, right? Um, and the problem that was staring at my face at Bazaar was कि एट दैट टाइम जितनी भी कंपनीज रेस कर रही थी वो बहुत पीपल इंटेंसिव कंपनीज थी. Hmm. राइडर्स, कोरियर कंपनीज थी, डिलीवरी कंपनीज थी, ई कॉमर्स था, एक्सेट्रा. एंड एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग टू हायर पीपल. Like my biggest problem at Bazaar, if you had to ask me from an operational point of view, was hiring riders. And you would say 25 करोड़ की आबादी है, इतनी बेरोजगारी है, मतलब सेंस नहीं बन रहा कि राइडर क्यों नहीं मिल रहे, राइट? Hmm. Yeah. So I was like, यार, let's solve this problem. It has a social impact and that, right? अब ये एक कीड़ा आ गया था दिमाग में. Hmm. And I think even when I was at Bazaar and even when I was quitting Bazaar, I knew it is not the right time because at that time interest rates had just from I think 0.5% से उठ के 5-5.5% में चले गए थे in a few months. Yeah. स्टार्टअप्स में फिर खबरें ऐसी आ रही थी, एयरलिफ्ट बंद हो गया, ग्लोबली भी लोग डाउन राउंड्स रेस कर रहे थे, कैपिटल ड्राई अप Yep. हो गया था. Even my conversation with Hamza at that time, जो हमारा फाउंडर था, he was like, probably the worst time to raise. Um, Hmm. but एक वो कीड़ा आ गया था. And मेरे लिए I would say the way I look at Hunar was I was at the edge and I was like, do I take this leap of faith, right? And मेरे लिए I think that was more important than anything else was कि do I have the courage? I come from a fairly humble background. मेरे पास I think at that time शायद बैंक में 4-5 लाख रुपए होंगे. तो 3 महीने का शायद 2-3 महीने का रनवे होगा. And I was like, do I do I have it in me to take this step, right? Hmm. That was the biggest decision. So I quit. I obviously डर बहुत लग रहा था. And I was like, you jump you have to jump at the point when you're scared, right? And of course, I had reassurances. Startup mein, I was well connected. I talked to a few people. I had a few early potential clients. Hamza and Saad, the founders at Bazaar, were very connected in the VC space. So, I knew they could help me with fundraise. Um, so that's why I took that step. And I felt कि जब गया when we actually entered the market and
एंड स्टार्टेड स्पीकिंग टू VCs, वी रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत ही बैड सीन है, मतलब पता था कि बैड सीन है, लेकिन ये तो काफ़ी बैड सीन है, बिकॉज़ एवरीवन वाज़ हेजिटेंट, right? Hmm. People were like, yeah, you're basically solving the problem that you've been facing for the past 2 years. You know, you have the right experience. My co-founder had a pretty good profile as well. But they were like, everyone was a little hesitant in deploying money. क्योंकि लोगों को पता नहीं था, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी, especially in a model that इतने पैरेलल्स नहीं थे, कि Hmm. इंडिया वगैरह में जिस तरह के लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है, वो डिफरेंट तरीके से किया है, हम डिफरेंट तरीके से करना चाहते थे, सो इतने पैरेलल्स नहीं थे, एंड उस टाइम पे आई थिंक लकीली लाइक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समहाउ रैंडमली मैसेज फ्रॉम द फ्लीक फाउंडर्स, and right about the time when we were about to sign our first contract with Hmm. Dastagir on just deploying, on I just had like interviewed the Dastagir guy once, and उससे थोड़ी सलाम दुआ थी, and he was like, yeah, let's work together. um so I got some, like, I think 50-60 बंदों का contract to deploy over there. And just when I Hmm. was about to like sign it off, I was like, सोच लो आशिम के, ये किस्मत ने मौका दिया दूसरा. And I think that is when probably sense prevailed. um I don't know if that is when PTI का भी शायद थोड़ा उस वक्त सीन चलना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल भी आना स्टार्ट हो गया था कंट्री में. So I think वो sort of those two combined um was like it now is not the right time, because all the startups have also started downsizing. Hmm. तो थिंग्स वर लाइक, भाई ये तो जिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, लोग तो हायरिंग ही नहीं कर रहे, फायरिंग करने. तो आई वुड से लाइक, मैंने मुझे ये था कि आशिम, तो अपने आप को तुमने ये प्रूव करना था कि यू कैन टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो मैंने कर लिया था. Hmm. So yeah, the entrepreneurial spirit is still very alive. Every time in showers Okay. and sleep, I'm just thinking about different problems to solve. But yeah. हाँ, नहीं ठीक है. That's very interesting because बहुत सारे लोग इसको एक नेगेटिव टर्म में व्यू करते हैं Hmm. of both sides, of leaving your job and starting something, or of quitting your startup and going back to a job. ये Hmm. दोनों चीजें एक टैबू के उसमें आ जाती हैं. But I think it's at the end of it you have to do what your gut tells you. And as an entrepreneur, जो तुमने कीड़ा कहा है ना, वो कीड़ा मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो वो कीड़ा ना मेरे गट में रहता है. ठीक है. एंड इट स्पीक्स टू मी वेरी ऑफन कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड आई हैव नोटिस्ड वेन एवर आई डोंट लिसन टू इट, Hmm. and whenever I'm being very operational or whenever I'm being very strategic and I'm ignoring my gut feeling, तो Hmm. वो डील अच्छी नहीं होती, वो क्लाइंट अच्छा नहीं होता, या वो डिसीजन अच्छा नहीं होता. सो कुडोस टू यू. आई मीन ये बात मैंने करनी इसलिए थी बिकॉज you're I think one of very few people who I know जिन्होंने ये ट्रांजिशन किया and then very quickly went back to it because you recognized के टाइम ठीक नहीं है, you know. So I think that's good on you, and it worked out well, right? Yeah. uh, अच्छा, एक हमारी पहले भी कॉन्वर्सेशन रही है एंड यू एक्चुअली स्पोक ऑफ दीज थिंग्स व्हाइल यू वर टेलिंग यू अबाउट योर लाइफ इन स्टार्टअप्स. और ये मेरा एक वो है, दिस इज माय ये क्या इशू. बैलेंस तो नहीं मेंशन करने लगे आप? यस, यस. दिस इज माय इशू विद मॉडर्न डे स्टार्टअप्स. और ये Yeah. सिर्फ बाय द वे पाकिस्तान नहीं, आई थिंक इट्स एवरीवेयर. Yeah. And I'll lay out a bit of context for you to pivot in that way your answer. मेरे मेरे दिन में जो बात है वो ये है कि अगर आप फाउंडर हैं और आपने खास तौर पे अगर आपने पैसे रेज किए, ठीक है, with money in the bank, the first responsibility you have is to hire a team that has enough capacity to handle your load. That's the first thing. ठीक है. Yeah. Second thing is के leadership से ज़्यादा responsibility of everything that goes on in your startup किसी और के ऊपर नहीं होती. No employee can or should take responsibility for any pertinent failure in your organization, in a startup, in a funded startup, than the founders, the CEO, वो जितने भी top के लोग हैं. ठीक है. But what I've seen is कि उल्टा होता है. फाउंडर्स जो हैं वो नेटवर्किंग स्प्रीज में होते हैं, फंड रेजिंग स्प्रीज में ज़्यादा होते हैं, और बेचारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो देर वर्किंग 12 to 16 hours a day, एंड दैट इज नॉर्मलाइज्ड फॉर देम. और ओवर टाइम पे नहीं होता बिकॉज देर टोल्ड कि यार ये तो स्टार्टअप स्पिरिट है, ये तो वो कीड़ा है जो हम आपके अंदर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं और आप समहाउ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. बट देन आई सी अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज
who work in startups, खास तौर पे जो अर्ली एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कि आप थे और हैं अभी, ठीक है, जो कि इसको बड़ा वो करते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है, देखो यार मैं 12 घंटे काम करता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। इनफैक्ट अहमद, माय पार्टनर एट मैकेंजी, वो ऐसे बताता था मुझे कि मैकेंजी में मैं आई वर्क एट 12 आवर्स, आई वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, इट्स प्रीटी नॉर्मल। आई वाज लाइक यार तुम पागल हो, वाई आर यू हम्म, वर्किंग 12 आवर्स अ डे, इट्स नॉट नॉर्मल। आज भी मेरे जो बेन मैकेंजी के दोस्त हैं वो ऐसे वो प्राउडली बताते हैं कि वी वर्क 70 आवर्स अ वीक, एंड आई एम लुकिंग एट देम एंड आई एम लाइक आई फील सॉरी फॉर यू, आई डोंट फील प्राउड ऑफ यू, यू नो, यू हम्म, इफ यू हैव मोर मनी इन द बैंक देन मी, कर क्या रहे हो उसके साथ, 70 घंटे तुमने काम कर लिया, हम्म। ठीक है। So what's your take on this? हमारी पहले हो चुकी है इसके ऊपर बात, we have our differences, but go ahead. मुझे याद है, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वी स्पोक अबाउट इट, हम आप टेरेस में बैठे हुए थे, हाँ, एंड यू यूज्ड अ टर्म दैट स्टक विद मी, was के you've glorified work life imbalance, yeah, right? yeah, yeah, And I completely agree with that. um but I'll tell you where I draw the balance, and I'll tell you why sometimes the balance shifts, right? please. I would say Silicon Valley backed जो या सिलिकॉन वैली इन्फ्लुएंस स्टार्टअप्स जो हैं, उसमें डेफिनेटली शदीद वर्क लाइफ बैलेंस की ग्लोरिफिकेशन है। लाइक इफ यू इवन आई वाज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप जिसमें किसी ने एक जॉब पोस्ट लगाई हुई थी, वेयर जॉब पोस्ट में लिखा हुआ था कि पता नहीं क्या, इफ यू केयर अबाउट वीकेंड्स, और इफ यू इफ यू हाँ, I've फास्ट, seen so many. Yeah, yeah, वो आती रहती है इस तरह की कि then this is not the job for you, right? yeah. Yep. Now, this is basically you are instilling that in your DNA of the company, and I completely disagree with that, right? Hmm. Um, because at the end of the day, like even though you might be young and you're thinking कि यार मैं 4-5 साल लगाऊंगा अपनी जिंदगी के और होपफुली मेरा स्टार्टअप $1 billion स्टार्टअप बन जाएगा, मुझे जिंदगी में कभी दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, Hmm. but still you are a human being, right? You will get married, you'll have children, or your family my members will have certain things, you'll face deaths, you'll face natural disasters, like वो सब आपकी जिंदगी का पार्ट बनेगा, राइट? लेकिन आपकी कंपनी आपको इतना वो कर लेगी, या वो उस प्रॉब्लम के अंदर आप इतने इतने घुस जाएंगे कि शायद आपको उन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, एंड ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग, राइट? Yeah. बट आई वुड से वेयर दिस कम्स फ्रॉम इज a lot of times people are just doing it for the first time, right? Founders, for example, right? So Bazaar founders were first time founders, Fleek founders were first time founders, right? And there's certain things that you just don't know, right? Hmm. No one has prepared you for it, right? So for example, you know at Fleek is a great example where for the first couple of years we were not that focused on finance, right? वी वर लाइक यार अच्छा, हमारा अच्छा कमीशन है, हमारी कॉस्ट थोड़ी कम है, इससे पैसा बनता रहेगा, बट एज थिंग्स स्केल, अच्छा ये तो गूगल शीट फट रही है, अच्छा ये तो 4 बिजनेस यूज केसेस और आ गया जो कि गूगल शीट पे हैंडल नहीं हो सकते, राइट? एंड नाउ यू स्टार्टिंग टू लूज मनी, सो then you suddenly put in a chaotic environment, right? Versus you know if you could, it's just you could not predict it, right? Versus certain, for example, at Bazaar when we hired super early, उसके अपने प्रोस थे, उसके अपने कॉन्स थे, राइट? सो आई वुड से कि जनरली थोड़ी, बिकॉज a lot of people are first time founders, it's difficult to foresee the challenges that will happen, right? And उसकी वजह से you make certain mistakes which take a longer time um, to correct, right? Like for example, at Fleek we had product folks late, and just yesterday there was a lot of tech debt that had to be fixed for us to scale, right? So इस तरह के you make mistakes, um, and which is perfectly normal for, of course, Yeah, sure. for any company. And दूसरा, generally stakes are high because fundamentally VC backed company है क्या? VC backed company ये है कि मेरे जहन में एक आइडिया है, राइट? अगर मुझे ये probably 20 साल में ठीक, मैं इसको कंपनी को यहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं इसको 3 साल में यहाँ ले जाऊंगा, राइट? Hmm. एंड VC इज लाइक कि मैं ऐसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो पोटेंशियली एक यूनिकॉर्न बन सकता है in 3 to 5 to 7 years, right? Yeah. Now you have a constant race against time because that is what commitments that you've made while you're raising money, and as you're making mistakes you're losing money and you need to raise more money, so you need to go back and make the same Hmm. commitments again, otherwise you'll run out of capital, right? So I would say because of these really high stakes, and because you just make mistakes, like at Fleek at least, the founders really care about work life balance.
right? But sometimes you're not able to help it, right? I mean, I wouldn't say at Fleek we're not glorifying work-life imbalance, Hmm. um, but you just get into situations where you know you need to get this done, otherwise just a lot is at stake, right? Like for example, अगर मैं अपनी example दूं, like I had a daughter like 2.5 months ago, and 5 days later I was in the office, right? And no one was, मतलब when I went to the office, my founder was like, भाई घर जा 1 महीने बाद आना, right? Hmm. But I was like, एक महीने बाद आऊंगा तो I have to handle this mess. No one else is handling it for me, right? So I think it's just a lot is at stake. Um, जिसकी वजह से maybe even if you want to give that work life balance, you're not able to. But I definitely think that this is not something that should be glorified. And I think that is where probably, especially Silicon Valley में तो बहुत ही ज़्यादा glorified है. Yeah. It's not something to be proud of. It's something to fix. Okay, so in order to fix that, so would you not say that is bad planning on many founders' part? कि लोग थोड़े हैं काम ज़्यादा है, don't they see it? यार होता है. Um, and again, like because of the high pace nature of it, um, firstly, founders make mistakes, right? Of course, I said it before, but they're all Hmm. making founders, leaders, everyone makes mistakes because they're all building the company for the first time, right? And Yeah. every company is unique, right? I'll give you an example. Like why we've at Fleet, for example, were slightly late in hiring was because Y Combinator, which probably has the best pedigree of startups that they have trained, Yeah. would all advise you about a hiring without going into details, would all advise you about a certain hiring strategy that just did not apply to Fleek, right? And Hmm. we tried applying it. So ऐसा नहीं था कि कोई गलती ऐसे कर रहे थे, मतलब जो आप सबसे टॉप पेडिग्री एडवाइजर्स हैं इन द वर्ल्ड, दे आर टेलिंग यू डू इट एंड देन यू रियलाइज अच्छा दिस डजंट अप्लाई टू फ्लीक, राइट? सो इतने टफ challenges होते हैं, इतने I'm not sure if you read the book Hard Things About Hard Things, but everything at Yeah. startups is Yeah. about hard things, right? um, so एक तो ये, और दूसरा ये कि समटाइम्स हायरिंग इज जस्ट रियली डिफिकल्ट, राइट? Oh yeah, it is. For sure it is. You make mistakes. Like for example, हमारे one of the functions at Fleek, we've been trying to hire for that role like for maybe I think 2 years, right? We hired someone, did not work out. We were like, अच्छा पर differently plan करते हैं, 2-3 structures में break कर लेते हैं, वो hire किया, then we realized नहीं है तो ऐसे करना था. ये तो Um, होता है. Yeah. it's been a few months since we've now hired it, and it's going great, but just hiring sometimes takes a lot of time, right? हाँ. And you have to hire a lot of people really really fast. And I'm बोलते अच्छा यार पहले ये hire करें, पहले HR function build करें. अच्छा नहीं, HR function build Yeah. करने का टाइम नहीं, पहले hiring करते हैं. फिर आपको 3 महीने बाद रियलाइज होता है अच्छा यार अभी तो मुझे 25 बंदे हायर करने हैं, मैं अकेले कैसे करूंगा, अब तो HR function पे जाना पड़ेगा. So I think you just especially for first time founders, maybe second time founders or second time leaders, you become slightly more you're able to predict it slightly better. Hmm. um, but I don't think the only thing I would say to your point is कि I would say कि ये consciously नहीं होना चाहिए, and I completely agree with you that there are a हाँ. lot of companies that do it consciously, like Yep. McKinsey for example, वो Oh, 50 they do it कंसल्टेंट, consciously. Yeah. या इवन सिलिकॉन वैली में सर्टेन स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि यार हम तो ऑफिस में ही सोते हैं और ये वो. Hmm. एंड Hmm. स्पेशली आई वुड से बिकॉज आई थिंक हमारा जो रीजन है पाकिस्तान और ये मीना वगैरह, यहाँ पे आई वुड से कि बिकॉज wages are not as insane as in the West, you do Hmm. have the liberty to overhire, right? Like Bazaar mein we used to say that your Yep. growth is dependent on how quickly you can hire, and as a strategy, we were very very quick in hiring, right? Hmm. Um, and I don't think Bazaar mein like hiring more people would have made our work life balance better, right? Maybe Fleek is slightly हाँ. different. But उस side of the world में where because now we hire in both UK and वो तो नज़र आ रहा होता है कि यार कितना, मतलब आप 15 बंदे hire कर लो at the same level versus over here. So you can actually solve problems through people. And Yeah. and Yeah. you should. Like, I don't think it should be glorified. नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. That's a good take on it. अच्छा एक ये by the way all of the conversation that we've had इसमें जितनी भी हमने चीजें डिस्कस की हैं they don't apply to all categories of business. For Of example course. SaaS है जैसे SaaS Hmm. is totally different now खास तौर पे AI के आने की वजह से. तो SaaS hiring is different. SaaS के लोग बहुत फर्क हैं. They're
उनकी टीम्स का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है. Yeah. So no one listening to this should take it as के यार मैं अगर SaaS build कर रहा हूँ तो मैं भी इन दोनों की बातें सुन के वही करना शुरू हो जाऊँ. It's different ball game over there, but generally yes. Uh, I think what employers need to understand, whether you're a founder or you're a senior leadership, is that people only work for you when they feel a purpose in working for you. They're happy enough कि वो जब बिस्तर से निकले तो वो ये ना सोच के निकले कि यार शिट गोइंग बैक देयर अगेन, कब जान छूटेगी, ये थॉट नहीं आनी चाहिए. एंड आई थिंक मोर देन मनी एक रिस्पेक्टफुल बैलेंस्ड अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाए तो इवेंचुअली पीपल ग्रो इन दैट मच बेटर एज वेल. आई थिंक यू विल एग्री, राइट? Yeah, I would just say कि जो तुमने पॉइंट बोला ना कि आई थिंक नो एडवाइस अप्लाइज टू एवरीवन. एवरीवन, राइट? या अभी ऑफ बड़ी कोर्स. फेमस एक who was this person? Airbnb का founder था who went to this YC community and he controversially said कि don't listen to advice, right? Because just no, and that is my, I would say my biggest learning at Fleek is कि no advice is replicable. Even the hiring or even the human thing जो तुमने बोली कि हाँ रिस्पेक्ट चाहिए या वो चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ लोगों को रियली एक्सपोजर, कुछ लोगों को एक्सपोजर चाहिए. हाँ, यूनिवर्सिटी में बहुत लोग होते थे यार कि भाई इधर जाना है ताकि बस 1.5 लाख रुपए मिल जाए. ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी पिटाई करें, लेकिन आई एम सेइंग कि some people would be like, यार at the end of the day, if I'm being paid well, I don't care about where I get in my career, right? Some people care about यार मुझे I want to work on meaningful things. Some people care about I want work-life balance. So it's very very everything is super subjective. And one of the things I think that Bazaar did really well was very in the early days we were able to identify कि यार as a company हमारी वैल्यूज क्या है, एंड जो बंदा उस वैल्यूज से अलाइंड है, यू हायर दोज पीपल, राइट? जिनको अगर फॉर एग्जांपल इफ योर थीसिस इज कि यार हमने पैसा ज्यादा देना है तो उन लोगों को हायर करें जिनको पैसे की परवाह है, राइट? अगर आपने ये परवाह है कि हमने ग्रोथ बहुत, हमने लोगों को ग्रो कराना है, तो आप उन लोगों को हायर करें जिनको जिनको ग्रोथ की बहुत परवाह है. सो आई वुड से कि again, like no advice applies to it any. doesn't. Even like for example, Bazaar और Fleeko अगर मैं compare करूँ, they're both e-commerce B2B marketplaces, right? There's so little overlap. नहीं, बिल्कुल सही सही बात है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई जस्ट वांट टू आस्क अ few very quick fire round type करना है एक end पे. But the last question that I wanted to go into detail is again linking with the last thought that I had कि ये तो SaaS और ops is different, like internet based business totally different from what you guys are doing right now, although you are an internet based business as well, but you know what I mean, right? So Yeah. AI has, you must have seen LinkedIn and all of these things Yeah. has उखाड़ के रख दिया सब कुछ AI ने. आपके बिजनेस में क्या किया है इन्हें? Yeah, AI has just blown my mind. Like, I'll give you a funny story. मेरी मेरे जो हमारे दो founders हैं, one is a CTO, one is a CEO, and the CTO has spent quite a few years in Silicon Valley actually. तो early days के AI से ना, he was talking about AI, ये कर देता है, vibe coding is this and vibe coding is that, and you would hear on LinkedIn and all of that. And this was me maybe like 2 or 3 months ago, right? Where you're hearing about how great AI is, but you don't know कि मैंने how do I get started, right? What करना are the क्या उसके steps? साथ? मैं Replit खोलूँ, मैं Bolt खोलूँ, मैं क्या खोलूँ, Yeah. खोल के क्या करूँ, NA10 खोल के क्या करूँ, मैं ये कर्सर कैसे चलता है, right? And we had a couple of hackathons and we were like, wow, this is so great. And the hackathon was specially designed कि engineers नहीं काम करेंगे, because the entire folks. this was कि you can do a lot of shit yourself now. And this is an interesting story because we went full swing. So हमने even after that hackathon I was like, हाँ but कुछ जगह में फंस रहे थे, हमें इंजीनियर की जरूरत थी, etc., right? And then because the CTO was saying it and he was an engineer, आपको लगता है इसके लिए बहुत आसान है, but हम लोग कैसे करेंगे? And then one day the CEO and CTO जो था हमारा संकेत, he was like, he ran a very nice go to market. He was like, एक बंदे को कन्विंस करता हूँ, फाउंडर को कन्विंस करता हूँ. फाउंडर के पास वीकेंड पे बैठा, उसने बोला चलो तुम कोड करो, तुम्हें क्या
लगता है कि सॉफ्टवेयर अभी प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर रहा, तुम वो कोड करो। एंड ही स्पेंड द वीकेंड एंड मंडे मॉर्निंग ही केम इन एंड ही हैड अ फुल फ्लेज्ड सीआरएम। वो व्हाट्सएप से कनेक्टेड था, वो ईमेल्स कर रहा था, वो सारे फैंसी डैशबोर्ड्स थे, एंड दैट वाज जस्ट सच अ ट्रिगर पॉइंट बिकॉज उसको देख के लग रहा था कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट? Hmm. एंड वी वर हैविंग दिस प्रोडक्ट रोड मैप आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमें अब देयर वर सो मेनी बिजनेस यूज केसेस जो कि हमारा करंट टेक स्टैक सपोर्ट नहीं कर रहा था, एंड आई वाज एडवोकेटिंग कि वी नीड टू बिल्ड एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एट Fleek. And my founder was like that we need to do it before October. And this was July. I was like, Sanket, I think even if we put these smartest people on this problem, Hmm. not going to be able to solve it before 6 or 8 months, right? And then when I saw this, I was like, I can build it in 2 weeks. Right? Hmm. I was like, I don't even need an engineer. I can build it in 2 weeks. And I said Hmm. full swing because probably that was also very exaggerated. So I think it's extremely exciting. And what we've come to the realization of is, and I would love to hear your thoughts as well. You're probably deeper in this area, is that there's some areas where we feel like AI slash vibe coding. Obviously AI has various domains. When I'm talking about how it applies to Fleek, I'm more talking about vibe coding. Um, is ke, um, for example, if you want to build prototypes, right? If you want to build a certain area, if you want to solve a certain problem of the company that is not super connected with your current tech stack, right? Hmm. In areas like those, it is super super helpful, right? I'll Hmm. give you an example. हम लोग um, एक एक चीज़ करते हैं फ्लीक में जिसको हम कंटेनर कारपूल कहते हैं। वो ये कि अगर आपने वेस्ट में स्टॉक मंगवाना है, एयर शिपमेंट इज़ रियली एक्सपेंसिव। You can get stuff through sea containers, but then you have to order a lot. So then you like 50 people can pool in, and then we can fill a container, right? But this was not supported through our tech stack at all, right? बिल्कुल अलग चलता था टेक स्टैक, ये बिल्कुल फ़ोन पे, ईमेल्स पे, एक्सेल के Right. ऊपर एक वर्कफ़्लो मिलती थी, उस तरह काम होता था। And this Hmm. one guy spent a weekend and he just built this entire process of customer facing. Okay, customers can come in, they can check out, they can see videos, they can negotiate, all of that. And this guy, by the way, does not come from a tech background, right? It's just that um, he just knew extremely like business context. No one had more than him because he was running the container cup. So he could build the entire product, right? And we rolled it out, and it was a lot more scalable. We got a lot more orders, and then engineers had to spend like 2 days to just integrate it on checkout. यार उसका checkout हमारे checkout का integrate हो जाए, and it's done. I think that is the sort of pace that AI has given us. Versus before this, probably आपकी conceptualization meetings होंगी, आपकी design meetings होंगी, आपकी PRDs बनेंगी, ERDs बनेंगी, sprint का part बनेगा, and these things, even if everyone is super convinced, um, the fact that you need engineers to code, you need product managers to understand from the business what is needed, and then translate it to the engineer, and then do the testing, right? And then take it back to business, and then business, अच्छा ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया. And the fact that Hmm. all of you can do if you can just speak plain English is insane and slightly scary. Yeah. um, and we often say that you probably won't like it, but we say with AI like probably SaaS is dead. But हाँ, that like काफी हद तक क्या. for example Calendly है, अब Calendly के लिए आप पता नहीं $5 आप पे करते थे, आप 15 मिनट में अपना Calendly खुद बना दोगे. So हाँ. it's असल very में very पता है बात क्या है? I'll tell you. I'll give my 2 cents on what you just said. एक तो by the way मेरा question different था. My question, I knew you guys would be in tech mm, and AI वाला कुछ ना कुछ कर रहे होगे. I was more positioned towards how AI has influenced your logistics and operational uh, workflows. oh, my हाँ. bad. तो Mm, उसका आंसर करना अभी, but I'll just fill in mm, to what you just said. इसमें ना it the word here is yet. ठीक है. mm, So, and that's the keyword because the software we're using to record this right now didn't exist 3 4 years ago, but there were softwares who were letting you record online videos. ठीक है. But this one lets you auto edit, magic AI है इसके अंदर. ums निकाल देगा, filler words निकाल देगा, will transcribe it for me. So this mm, happened relatively quicker, but the road to it was pretty long.
ठीक है. Now the same is happening with स्मॉल और स्मॉल भी नहीं कहूँगा, लो हैंगिंग फ्रूट, और जो इंजीनियरिंग का लो हैंगिंग फ्रूट है ना, उसके अंदर अभी हम्म, ये वाली चीज़ हो रही है. ठीक है. या जिसमें लाइक यू राइट, पहले एक छोटी सी सिस्टम बनने के लिए भी डिज़ाइन होगा, आर्किटेक्ट होगा. अब इंटरनल सॉफ्टवेयर्स के लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है. या ठीक है. एक्सटर्नल के लिए अभी भी करने की ज़रूरत है, या बिकॉज यू नो AI hallucinates and whatnot. तो आई थिंक द वर्ड हियर इज येट, कि अभी तक आप क्या कर सकते हैं. अभी तक आप जो कर सकते हैं वो तुमने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया. ठीक है. probably another 2 years यही चलता रहेगा. देन हम्म, इवेंचुअली you'll see के जैसे आज हम बहुत सारे ऐसे काम जो कि 10 साल पहले करने के लिए हम we used to spend a day, we do it in 15 minutes, like grocery for example, एक दिन का हम्म, टास्क होता था 15 मिनट का टास्क. ठीक है. हम्म, so just like that AI will reduce that time. बट मेरा या एक प्रॉब्लम है इस पूरे इसके टेक से, एंड दिस इज अ हॉट टेक फ्रॉम मी. ठीक है. मैंने एक दो लोगों को बोला है, दे डिसएग्रीड विद मी, बट स्टिल यू नो व्हाट, हम्म, मुझे लगता है कि जो स्पीड का एंगल है ना, वो गलत तरीके से लिया जा रहा है. ठीक है. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, इवन यू वर लाइक राइट नाउ सेइंग के यू नो इट टुक अ वीकेंड, और इट टुक 2 days, और इट टुक 3 days. ठीक है. बिकॉज पहले तो यार महीना लग रहा था. ठीक है. हम्म, तो अब तुम उसको 2 days पे श्रिंक कर रहे हो. ठीक है. इन दैट श्रिंकेज, लाइक यू जस्ट सेड, आप सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, वाइब कोडिंग कर रहे हैं आपसे, तो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग हो सकता है, एज केसेस मिसिंग हो सकते हैं. हम्म, तो आई थिंक द द बार शुड नॉट बी कि मैंने 2 दिन में सॉफ्टवेयर बनाया. द बार शुड बी के यूजिंग कर्सर और बोल्ट और वट एवर, आई मेड समथिंग दैट वुड हैव टेकन मी a month, but I've reduced it by let's say 50%. ठीक है. इतना बार एक्सेप्टेबल अगर हम रखें, तो हम उसकी टेस्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं, उसका एज केसेस सॉल्व कर सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स. तो आई थिंक हम्म, दैट्स माय टेक ऑन दिस के with AI everything boils down to speed. I think yes, it does, but speed by a magnitude of 90% over just 6 months, ये थोड़ा सा unfair है even with AI. तो टाइम लगना है, टाइम उसमें भी लगेगा उसको इम्प्रूव करने में, बट आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेड exemplifies a lot of what smaller startups are getting themselves into right now. कि वो बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से अवॉइड करते हैं अपने आप को, बिकॉज यार किसी का $10 देना पड़ेगा, for someone I'll have to pay $30. It's too expensive. Now you can just build it on your own, and that's हम्म, fine. As an internal tool, it works. But give me an answer for your operational stuff. AI ने हम्म। उसमें क्या किया? मैं एक कमेंट करूंगा, थोड़ा आदत से मजबूर हूँ जी जी प्लीज सर, प्लीज. ऑन व्हाट यू सेड। आई वुड से कि जो टाइम कम हो रहा है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइम इज इट सेविंग। सो अगर आप एक किसी प्रोजेक्ट को एक आइसोलेशन में निकाल के उसकी पूरी आप एक यू नो टाइम सीरीज मैप करें, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लाइन पे करते हैं, इतना सेकंड इसमें लगा, इतना मिनट इसमें लगा, एक्सेट्रा। जो टाइम मेरे हिसाब से एआई से सेव होता है ना, वो होता है एक तो वेटिंग का। ठीक है, Yeah, कि अब आपने आज मीटिंग रखनी है, सॉरी यार आज किसी का कैलेंडर फ्री नहीं है, अब 3 दिन बाद का कैलेंडर yeah. मिला आपको आइडिएशन के ऊपर, राइट। अब आप बैठ के उधर आइडिएट कर रहे हैं, फिर आप यू नो नॉलेज ट्रांसफर में जो लीकेजेस होती हैं, कि मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर को बताऊंगा, प्रोडक्ट मैनेजर मुझे जितना भी चैलेंज कर ले, वो यूजर तो नहीं है, यूजर तो मैं Hmm. हूं। वो उसको समझ के फिर वो इंजीनियर को समझाएगा, राइट। फिर आप पीआरडी लिखेंगे, ईआरडी लिखेंगे, आप उसको बनाएंगे, फिर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर आप पूरा यू नो आपके मुताबिक रेडी टू शिप हो जाएगा। जब वो फिर मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा अच्छा यार, ये इसको अगर मैं एक साथ 2 दफा क्लिक कर देता हूँ गलती से, तो ये 2 दफा एंट्री एंट्री चली जाती है, इसको ठीक करें। Hmm. सो ये जो वो बहुत जल्दी. टाइम ऑफ आइट्रेशन है एंड टाइम ऑफ वो, आई थिंक दैट इज द रियल सेविंग। बट आई कंप्लीटली एग्री विद यू, इट्स अ स्लिपरी स्लोप। यू कैन वेरी इजीली जस्ट मेक दैट योर मेट्रिक कि मैंने 2 दिन में करना है, and then miss out on testing and miss out on ये H यही बात मैं कर रहा हूँ. हाँ. which is a slippery slope, and I think लोग थोड़ा It is, yeah. गलतियां कर करके सीखेंगे इसमें। हाँ हाँ, for वो मैंने इसलिए कहा ना, द वर्ड इज येट. तो वो The word AI भी सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं. is- हमारी अडॉप्शन AI से स्लो है अभी. ठीक है. AI adopts much faster, but let's see what happens. But yeah, give me an answer on that ये operational stuff, man, because that's where I'm really curious. हाँ यार, आई वुड से कि द वे आई लुक एट इट इज के अगर किसी डब्बे को फिजिकली उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, हम्म. उसके अलावा एआई कैन टच एवरीथिंग, राइट। ठीक है. इंटरेस्टिंग. एंड
I'll give you an example. So हम for example we have a quality control center. Hmm. जब प्रोडक्ट शिप हो रहे होते हैं तो वो एक क्वालिटी कंट्रोल सेंटर से गुजरते हैं। उसमें एक इंसान होता है, वो उठा के देखता है कि यार इसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, फेक तो नहीं है, एटसेट्रा, राइट? Yeah. um, that is something AI can do so much better and so much faster than Hmm. a human being, right? Of course, you have to train it with your Are data you and doing stuff it? like that. Are you guys Yes, doing it? yeah. Okay. So you know, that is one, right? And probably you can argue पहले भी कि यार image processing तो पहले भी थी, and but it's just the accuracy and the fact that you can, you know, हाँ, नहीं नहीं, it's वो AI से तो आर्ग्यूमेंट चेंज commoditized हो होगी गया ना तो, फिर। हाँ। yeah. हाँ। Um, right. Similarly, another thing that very small things, like for example हमारी there's a certain aspect of the side of the business which is very like brokered, and customer phone कर रहा है, supplier phone कर रहा है, etc. हम्म। And उसमें बहुत information चाहिए होती है कि यार इसमें इसकी अगर ये सिनेरियो होगा तो शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, अच्छा शिपिंग कॉस्ट को नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ हमारे जो शिपिंग बंदा देखता है उस बेचारे का हर वक्त एक एक क्यू लगी रहती थी उसके आगे कि यार इसका बता दें, इसका बता दें, इसका बता दें, एंड ही जस्ट सैट हम्म। एंड जस्ट डम्प्ड हिज ब्रेन इनटू, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने दिमाग में तो मैथ ही कर रहा है ना, उसने वो सारा एक हम्म। कागज में लिखा। बल्कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड कर लें चैट जीपीटी पे, और तो जो भी हाँ। ये कॉमन एफएक्यूज होते हैं दैट गो अराउंड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑपरेशन से काफ़ी रेलिवेंट होते हैं अक्सर के, इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, इसमें टाइम कितना लगेगा, ये कस्टम क्लियर कैसे होगा, एंड नाउ इट्स ऑल अ बॉट व्हिच एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन जस्ट आस्क दैट हाँ। बॉट। um so I would say those are a couple of areas. The third one, which is probably I think the most advanced in today's world, is all your customer experience stuff, right? Which honestly is also a little annoying on the receiving end, bot से बात करना। When I'm talking to even Amazon का bot, my first instinct is कि यार bot को हटाओ जरा, customer service agent तो है, वो मेरा मसला समझे। या। Because again वो like edge case mapping and वो शायद इतना helpful नहीं होता, but I would say कि that is one area where um, I feel like जो कंपनी में इतनी सारी अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, उसको इफ नॉट फॉर द कस्टमर देन एटलीस्ट फॉर एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द कस्टमर सपोर्ट एजेंट एंड ऑल ऑफ दैट, उसको आप किस तरह फ्रंट लाइन कर सकते हैं। आई वुड से दैट हैज probably been probably really helped teams do like more value added tasks. But otherwise I would say like logistics is probably the one that is one of the functions, I don't know, maybe there may be more, which are least touched, because there's a physical movement of goods involved, there's like commercial contracts etc involved. But what it does enable you is to be smarter, right? Like for example, हम्म। we have not done it yet, but just thinking out of the box, okay, if you have 5 logistics partners, then how do you smartly allocate volume to them and stuff like that? So anything that हम्म। you are doing, um, I think, एल्गोरिथमिक लेवल के ऊपर yeah, AI yeah. will help So ना। हाँ। I would say like abhi jo, for example, the use cases that I have seen now is one with our quality control center, and all of that, it has really helped. And the other is I think जो भी चीज कोई एक सर्टन लॉजिक फॉलो करती है लेकिन आपको बार बार करनी पड़ती है, हम्म। जो कि ऑपरेशन में बहुत होता है, राइट? ऑपरेशन इज वेरी वेरी रिपीटेबल, एक ही चीज रोजाना हो रही है, रोजाना हो रही है, रोजाना हो रही है। हम्म। That has really helped us in like making it automated. Without like, probably it's not enough कि आपके वो product roadmap का part बने and आपको engineers लगे etc. You just do it yourself with the vibe coding. But I would say those are probably the two areas specific to operations. Okay, interesting. Okay, good. So I just have a few quick fires, just one-liners, one words. जल्दी जल्दी करेंगे and then we'll wrap this up. Uh, okay, so I have a few. I'll just ask a couple of them. One skill every startup leader must have. Brutal prioritization. Prioritization. ठीक है. A founder you look up to and why? Yeah, everyone's done about it. um, but I would say कि probably one skill that makes you a founder more than anyone else is how big you can dream, right? And I've been lucky enough that all the founders had that, but I would say the current one, the CEO, he probably dreams to the point of being delusional. Oh, really? Um, Nice. mm, Okay, that's pretty cool. Uh,
The toughest decision you've made in your career so far? Hmm. The first person I had to let go. Uh, in Fleek It was like or the first person in my Acha? career that I had to Oh, like right, right, right. just let go. I think that was very tough. Okay, ठीक है, fair enough. Uh, if अब you अब could, अनफॉर्चुनेटली आदत बन जाती है बट द फर्स्ट टाइम इट वाज हाँ, यही. वो तो बन जाती है. Yeah, no, I can relate to that. If you could redo Hunar, what would you do differently? I would spend less time in building presentations, docs, financial models, talking to people, and just build, just do. हाँ, My ठीक है. my financial So model is at Hunar was more sophisticated than the one I use at Freak. then it. Story of every business that actually runs. Acha ji. Last one. One piece of advice to anyone who's thinking of leaving their MNC career for a startup, whether for a job or doing it on their own. um, Only do it if your gut is telling you to do it, Yeah. right? And what you should tell your gut is you have to be obsessed for a really long time to stay motivated in doing that, right? And especially as founders, because as an employee, you can still quit, right? You can still quit, Hmm. you can go back. Yeah. But as a founder, if you have like 20, 30 people team, if you have raised funds, if you have customers, if you have suppliers, it Hmm. would be really, really tough. I bet it's very, very lonely as a founder. Oh, yeah, it is. एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा भाई, if you're a founder and if you're leaving a high paying job, कम अज कम at least 1 साल का रनवे, Hmm. पर्सनल रनवे, नॉट जिसमें से कोई पैसा कंपनी को ना जाए. ठीक है, वो पर्सनल रनवे एटलीस्ट फॉर ईयर यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट. इफ यू डोंट, प्लीज keep on doing your job or join a startup as an employee. Do not start a startup on your own. It'll be incredibly difficult even if you raise funds, because बहुत दफा फाउंडर्स को पैसे बाद में मिलते हैं या इनफ नहीं मिलते, इसलिए. Hmm. Hmm. I think what that Okay. would do more than anything else is that would just give you more courage, Oh yeah, it make would. you more fearless, right? हाँ हाँ, absolutely. ये fear की game है यार सारी. Just the other day I Yeah. was speaking to a friend and we were like, this is all manipulation of our fears. Whether our employer does it or we do it to ourselves, it's all fears. Yeah. So yeah. Anyways, thank you Hashim so much for taking out the time. I know it's a busy day for you, a busy week coming ahead, and it's a Sunday. So thanks for taking out the time once again. Uh, Yeah, I yeah, really enjoyed it. it's great to have you. Yeah, I really enjoyed it. First time doing it, really, really enjoyed it. No, I'm glad. I'm glad. Always All good right. always good talking to you. Likewise, man. Likewise. Just like old times. All right, man. Take care. Thank you. Um, Allah Hafiz. okay, Bye. Hafiz. Bye-bye.